Hi guys, welcome back. So today in this lecture we will discuss create a filtered lookup with a choice lookup. Okay. So to start this session, previously session will be discuss about the select up multiple opportunities in lookup. Okay. So in this multiple opportunities, what I do, I selected the multiple opportunities for that like this. Okay. When I refresh this page once again. Okay. Yeah, I selected the multiple opportunities out there like this. Okay, here. Okay. See, I selected the multiple opportunities out there because when I click on this flow and it is, yeah, maximum selection I wrote in the I do in the 10, that is select maximum record to be 10. That's why it selected multiple. When I leave it blank, I don't enter any value of that, and when I hit save button and just activate this, then it's work like a simple lookup. That is, it selected only one item. Just refresh this page and see I only select the one item. I don't want अब मेरे पास ऑप्शन नहीं दे रहा है कि मुझे दोबारा कोई और दो तीन सेलेक्ट कर लूँ. सो अगर आपको कोई ऐसा रिक्वायरमेंट आता है जिसमें मल्टीपल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी सेलेक्ट करना है विथ लुकअप से, तो आप ऐसे कर सकते हो जैसे मैंने अभी पिछले के सेशन में बताया था. आज के सेशन में हम लोग ये पढ़ेंगे फिल्टर्ड लुकअप. जैसे अब यहाँ पर मैंने जब पिछले सेशन में लुकअप लगाया था अपॉर्चुनिटी, वो सारी अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा था स्क्रीन फ्लो में. वो फिल्टर होके नहीं आ रही थी कौन से फिल्टर किस पे जा. मुझे चाहिए कि सिर्फ ओपन अपॉर्चुनिटी चाहिए, ये सारी अपॉर्चुनिटी क्लोज भी लेके आ रहा था, सारी अपॉर्चुनिटी लेके आया था. बट मुझे चाहिए कि मुझे फिल्टर होके आए अपॉर्चुनिटी लुकअप में, वो कैसे होगा. ठीक है. सो उसे करने के लिए मैं एक चॉइस लुकअप यूज़ करूँगा. ओके. सो कैसे करना है वो देखना. सर सेटअप पर जाना. जस्ट आई कट दिस ऑल द थिंग्स. क्लोज. ओके. गो टू फ्लो. Okay, after this click new flow. Start from scratch, click next and click create. Okay, after this go to plus icon, make a screen flow and label it in choice filtered lookup. Okay, then select in the component of the choice lookup, just select this. Okay, filtered opportunities. Okay, just make it required is equal to true, and in the choice just add the new record choice set. This record choice set, record choice open opportunity. Okay, opportunity, search opportunity, and in this opportunity is closed equal false. इसका मतलब ये रहा कि क्लोज नहीं होना चाहिए, आपका क्लोज वन नहीं होना चाहिए. ठीक है, तभी ये अपॉर्चुनिटी सब फिल्टर होके आएगी कि कोई भी स्टेज पर हो, लाइक डिसीजन मेकिंग, एनालिसिस, वैल्यू प्रोपोर्शन, कोई भी स्टेज पर क्लोज वन नहीं होना चाहिए. वो फिल्टर होके आएगी रिकॉर्ड्स आपकी पहले से कि क्लोज वाली रिमूव कर दिए, बाकी जितनी अपॉर्चुनिटीज़ है वो सारा अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा. करेक्ट. ओके, एंड सॉर्टेड होना चाहिए आपका असेंडिंग में बाई नेम से. मान लो मैंने सॉर्ट कर दिया. ठीक है. maximum number of choices, remove it blank, leave it blank, sorry, and choice label will be name. Text id select होगी. Okay, and leave it blank. Okay, just select this. Okay,
After doing this, okay, after doing this, default value कुछ नहीं, set come, okay, done. Okay, opportunity filtered. Just to move this once again, and yeah, opportunity filtered, opportunity filtered. दोनों बार लिखा गया, sorry. अपॉर्चुनिटी फिल्टर्ड, ठीक है, यहाँ पर मैंने ये हटा दिया, जस्ट रिमूव दिस एंड दिस, ओके, ठीक है, क्लिक डन. एंड आफ्टर दैट वी वांट टू अपडेट द रिकॉर्ड, अपडेट opportunity, okay, and search opportunity, and कंडीशन में होगा id equals opportunity filtered, selected choice levels, selected choice values, okay. Then after that, stage name, क्लोज लॉस्ट, ठीक है, मैं क्लोज लॉस्ट से फिल्टर कर रहा हूँ. एंड दूसरे स्क्रीन पर आपका मैसेज डिस्प्ले होगा, डिस्प्ले मैसेज, ओके, मैसेज डिस्प्ले में होगा your selected records are lost, okay. Select this, make it bold, 18th, center, and yellow, no, okay, your selected record are closed lost, okay. Just save this, okay, just save this, label it name as filter choice lookup, just activate this, let's check whether it's working fine or not, okay. I'll go to home tab, go to edit page and add selected filter choice lookup. In the component search flow, drag the component here, selected opportunities, sorry, filtered choice lookup, select this, click save and go back. See, opportunity filtered. When I click on this, these are the opportunities which are not closed, okay. To check this, Dixon mobile generators, just check this opportunities are to be closed or not. See, here is the stage is qualification. When I select this to check whether
इट विल बी फिल्टर्ड और नॉट, कि अपॉर्चुनिटी क्लोज में आया है कि नहीं, मैं चेक करने वाला हूँ, क्योंकि ये क्लोज वन है और मैं अपने कंडीशन में डाला था कि क्लोज नहीं होना चाहिए। सी फिल्टर हो क्या है ये कि क्लोज नहीं होना चाहिए, मैंने फॉल्स रखा है, इज क्लोज इक्वल टू फॉल्स, जो क्लोज होगा वो हट के आएगा, तो ये क्लोज हो चुका है इसलिए नहीं दिख रहा है। कोई ऐसा उठाओ जो क्लोज नहीं हो रखा है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मुझे यहाँ पर दिख भी रहा है, सो दैट कंफर्मेशन के लिए मैं तुम्हें दिखाने के लिए यहाँ पर चेक कर रहा हूँ। क्वालिफिकेशन स्टेज उठा लो, कुछ भी वैल्यू प्रोपोर्शन वाली उठा लेता हूँ, एक्सप्रेस लॉजिक, क्या ये उठा लेता हूँ, एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स SLA, ठीक है। कॉपी दिस एंड जस्ट पेस्ट दिस, सी ये देखो आया ना। अब मैं जिस पर क्लिक करूँगा, इसका स्टेज क्या है, प्रोसेसर एनालिसिस, ये लोस्ट हो जाएगा। मैंने क्लिक नेक्स्ट, सी योर सेलेक्टेड रिकॉर्ड आर क्लोज लॉस्ट। जब मैं जाऊँगा, मैं रिफ्रेश करूँगा, एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स SLA आपका क्लोज लॉस्ट हो जाएगा। सी क्लोज लॉस्ट, it's changed to close loss. So this is how you can filtered out you with the choice lookup. Okay, and I hope you will like this video. Please hit like and subscribe my channel and stay tuned for the future update. And if you have any query or doubts, please write down in the comment section. Thank you guys.